Today I'm going to discuss the remaining topics related to our information technology. Fine. And the topics which we have covered already in the last session, the topic was including like some protocols about the some internet protocols we have discussed. Okay. Also, we have discussed about the supercomputers. We have discussed about the computers. Fine. And some top 10 supercomputers of the world we have actually discussed. Okay. So, today we have to discuss some supercomputers of India. Okay. Which is actually advanced in reference of India. Okay. Advanced supercomputer in reference of the India. Fine. And before this, we will discuss about the India's effort to develop the supercomputer. Okay. That means we have to discuss about the India's efforts to develop super supercomputer. Hmm. Okay. Hmm. India was actually denied the supercomputer from the USA. Okay. During the Cold War, I think it's the time of something 1919. During the Cold War, the India actually denied for what? For the supercomputers from the USA. USA actually want to give the supercomputer to India, but India denied that. And Cold War era, then the India established its indigenous supercomputing. Okay, the facility known as the Center for Development of Advanced Computing. Okay, सबने आपने सुना होगा. There is a CDAC. Okay, CDAC is here stand for the Center for Developing Advanced Computing. Okay, so CDAC is a government body. Okay, and this is established in Pune in the year of 1988. In the year of 1988. Okay, and actually the CDAC is initiated the development of the first supercomputer series of India. Okay, and the first supercomputer series of India is known as the Param supercomputer series. This is known as Param series. Okay, Param series, and this is considered as the first supercomputer of India. Okay, in which year? After the establishment of the CDAC in 1988 in Pune. Okay, and today we know that there is some supercomputers of India which is very known, and there is no need to introduce them, and they are known as like the we have the at the right now we have the Mihir supercomputer, we have the Pratyush, we have the Param 10,000 also. Okay, so these are the supercomputers of the India. Okay, so in the year of 1991, the first supercomputer was developed by the India. Name is the Param 8000. Okay, which is name as the परम 8000. ऐसे आप कहीं पे भी मेंशन कर सकते हो इसको. परम 8000. Okay, so Param 8000 in the year of 1991. Okay, after the 3 years after the establishment of the CDAC. Okay, Center for the Development of Advanced Computing. ठीक है.
and after that Param 8600, Param 8600 in the year of the 1993, 1993, and then Param 9000 in Param 9000 1995. Okay, so by the year of 1998, it introduced the 100 gigaflops supercomputer known as the Param 10000. Okay, that means the in the Param series, the Param 10000, Param 10000 is the first supercomputer of India with the speed of the 100 gigaflops. Okay, how much? 100 gigaflops. That 100 gigaflops was the speed of the Param. Okay, speed of the Param 10000. So you can see here that after the establishment of the CDAC, this is the Center for the Development of Advanced Computing, the series of the supercomputers is developed by the India, and the first series of the supercomputer of India is known as the Param series. Okay, in which the India have developed firstly the Param 8000, then Param 8600, then Param 9000, and after that in the year of 1998, the first 100 gigaflops supercomputer with the speed of 100 gigaflops, the supercomputer Param 10000 was introduced by the India. Okay, and today actually this Param 10000 is actually today using by the Niti Aayog. Okay, this is in working actually. Niti Aayog. Clear? Okay, more accurate with high speed. Okay, more accurate with high speed, the supercomputers are working, and the supercomputers are more advanced than the personal computer, or you can say than the traditional computer. Okay, so here all district headquarters and the state have been linked with the national capital by NET. This is a satellite based network system used for the national planning, monitoring law and order at district level, monitoring draft flood mapping, ठीक है, census compilation, etc. That means the program program which is done, which is carried out by the Niti Aayog, is actually done with the help of the Param 10000 supercomputer. Okay, so in the year of 2003, the the CDAC actually launched a powerful supercomputer which was known as the Param Padam. Okay, in the year of 2003. Okay, in 2003, this is developed the Param Padam. Okay, the CDAC is developed the Param Padam. This is a powerful supercomputer, and which enable the India for the first time to India teraflops. That means the Param Padam with having the speed in the teraflops. Okay, and by this speed, the Param Padam is considered as a what? As a global level, or you can say the international level super computer of India. Okay, तो आप देख सकते हो कि CDAC, ठीक है, this is the center which is responsible for the development of the advanced computer. Okay, and we know that the advanced computer, or you can say the the supercomputer is known as the advanced computer. Okay, so India is now in the club of the teraflops supercomputers. That means the Param Padam, okay, Param Padam established the India in the club of the teraflops supercomputers. That means the supercomputers with the speed in the teraflops. Okay, so India teraflops club mathematically operations per second, ठीक है,
and this supercomputer is mainly used in forecasting. Okay, this supercomputer, this Parampadam, is actually using by the IMD, this is the Indian Meteorological Department. Okay, for the forecasting of the weather. Okay, for the weather forecasting, ठीक? Environmental forecasting. For this purpose, this Parampadam is using. Okay, so the fastest Param series supercomputer is a Param Yuva second, and with the speed of the 5.24 teraflops. Okay, 524, sorry. Okay, by the speed of the 524 teraflops, and this is used for the drug designing and the testing, which is this. Next is the Param Yuva. Param Yuva 2. Okay, so Param Yuva is 2 is here with the speed of the 524 teraflop. Okay, 524 teraflops, and this is actually using by the using for the drug design and the testing and testing. Okay, one more thing is here. When the new drug is introduced, okay, any new drug is introduced in the market, so before the introduction of the new medicine in the market, there is a lots of the R&D work. Okay, there is a lot of the R&D work, including the testing, including the quality control, including the clinical trials, including the approval, and including the final manufacturing processes. Okay, so for this purposes, this Param Yuva, you can say the supercomputer is used. Okay, Param Yuva 2. Okay, so here some supercomputers are here which is developed by organization other than the CDAC. That means ki apart from the CDAC, the other organization is also here which is developed some supercomputers. Okay, some supercomputers developed by other organizations. Okay, so here the computers like the flow solver. Okay, so flow solver is developed by the National Aerospace Lab. Okay, developed by National Aerospace Lab. Okay, if the question is here that give you can say the enlighten the development of the supercomputers in India. Okay, so in that case you guys will have to mention this flow solver. You guys, you have to mention this type of the examples, including the flow solver, including the examples of the supercomputers which are developed by the CDAC. Okay, the next one is the PACE. Okay, PACE is developed by the Advanced Numerical Research Analysis Group. Okay, one thing here, National Aerospace Lab is at the Bangalore actually. कहाँ पर है? Bangalore. Fine. So next one is the PACE. This is developed by the Advanced Numerical Research Analysis Group. Advanced Numerical Research Analysis Group. Okay. And this is the PACE
and processor for the aerodynamics computation and the evaluation. The next one is the Anurag. Anurag is also supercomputer. Okay, Anurag. Anurag is actually, this is a unit of the DRDO. ठीक है, unit of DRDO. Okay, that means this is developed by a unit of the DRDO. कहाँ पर है ये? हैदराबाद में आई थिंक. ठीक है. So Indian Institute of the Tropical Meteorology Pune is actually using the Pratyush. ठीक है, अभी बात करेंगे Pratyush and Mihir where is this is used. Next one is there is one another supercomputer and the name is the Anupam. Anupam, and this Anupam this Anupam supercomputer is developed by the Bhabha Atomic Research Center by BARC. Okay, Bhabha Atomic Research Center. Next is the Saga 220. Okay, Saga 220, and this is developed by Indian Space Research Organization known as the ISRO. Okay, and this is the supercomputer for the aerospace with graphic processing. Okay, unit architecture. Okay, and the speed of this Saga is the approx. Why the speed is 220 teraflop. कितना? 220 teraflop. Okay, and this is used by the ISRO to solve the complex aerospace problems like the designing and launching of the satellite launch vehicle. That means अभी जब हम बात कर रहे थे in the space technology, right? So in the space technology we have discussed that the development of a launch vehicle is a very complex process. Okay, and also the cost consuming also. Fine, देखा हमने कि more than 70% of the cost is consumed in the development of the launch vehicles. Okay, और बहुत ही complex होता है इसका development. किसका? Launch vehicles का. So these types of operation is carried out by the Saga 2020 in case of the Indian Space and the Research Organization. Speed unit. Okay. Yes, speed unit. This is the teraflops. Okay, this is the teraflops. Next is here the Aditya supercomputer. Next one is the Aditya supercomputer. What is the meaning of Aditya? Aditya means sun. Okay, so here the Aditya supercomputer with the speed of the 720 teraflops. Okay, teraflops, and this is used by the Indian Institute of Tropical Meteorology. Okay, this is known as the Indian Institute of the Tropical Meteorology and established in the Pune. ठीक है, Indian Institute of Tropical Meteorology. Fine, Indian Institute of Tropical Meteorology. Clear? And obviously this is the meteorological department. Okay, so this computer is used for the climate science. Okay, this is used in the climate science. Okay, including the climate forecasting in the tropical area. Okay, in the tropical area this Aditya supercomputer is used. Okay, next one is the Sahasra. The next one is
Sahasra. Sahasra supercomputer, and Sahasra supercomputer having the version of the Sahasra T. Okay, and this is used by the Indian Institute of the Science, which is known as the IISc. Where is this? This is in the Bangalore. Okay, so this is the fastest supercomputer of India with the speed of the 1.46 petaflops. कब? जब ये बना था. ठीक है, तो the speed of this supercomputer is the 1.46 petaflop. Okay, actually at that time that this Sahasra was the only supercomputers with the speed in the petaflops. Okay, gigaflops, teraflops, then petaflops. Okay, so nowadays the petaflops is the larger unit. Okay, for the speed of the supercomputers. Okay, so petaflops used for the complex astrophysics. Okay, studies. This is using by the ISC by IISc Bangalore. Okay, so this is the Indian Institute of the Science. Okay, so the Sahasra supercomputer is using by the using for the astronomical studies, for the astronomical studies purpose. Okay, and apart from this is also using for the origin and evolution of the universe and about the birth and death of the stars. We are also including the astronomical studies. Okay, like the what birth and death of stars, death of stars. Okay, बहुत सारी theories भी आप जानते हो इनके बारे में दिया गया है. ठीक है, then like the what origin and evolution of the universe. Okay, origin and evolution of the universe. Clear? So this is the Sahasra supercomputer. Okay. Nowadays, actually, we are just talking about some another supercomputers of India, and in which the here is some supercomputers like if we just talking about the which is the fastest supercomputer of India. Okay, so the today the fastest supercomputer of India is the Param Siddhi. This is also a Param series supercomputer. Okay, and this is Param Siddhi. Okay, Param Siddhi with AI. So complete name इसका है Param Siddhi AI. Okay, AI is here. AI is here for the artificial intelligence. Artificial intelligence. So Param Siddhi is a artificial intelligent powered super computer. Okay, with high performance. कैसा performance? With high performance. Okay, that means the here the artificial intelligence is here. That means it can the analyze the data. ठीक है, according to the need. ठीक and developed by the CDAC. Okay, ऐसा आप समझ सकते हो. Developed by CDAC. Okay, Center for the Development of Advanced Computing, and इसमें आपका MIT भी इंक्लूड है along with Ministry of Information, Ministry of Electronics and Information Technology. Okay, Ministry of Electronics and Information Technology. ठीक है, so the MIT. ठीक, the MIT is also including for the development of the Param Siddhi. ठीक है, so recently actually the Param Siddhi is considered as the
top 100. This is the 63rd computer. 63rd computer, okay, in top 100 super computer around the world. Around the world. Okay, fine. So around the top 100 supercomputer around the world, the Param Siddhi is actually holding the rank 60, rank 63rd. Okay, and according to CDAC, the fastest supercomputer of India, the Param Siddhi, has a peak of 5.67 petaflops. That means it can be performed at the speed of the 5.67 petaflop. 67 petaflop. Okay, that means this is the highest. You can say this is the fastest, not highest. This is the fastest supercomputer of the India. Param Siddhi. ठीक है? AI. एक complete name. Okay. So this is we know that the Param Siddhi is AI built. Okay, so when the any computer, you can say AI, no, sorry, device is actually enabled with the artificial intelligence. Okay, so this artificial intelligence is provide the many assistance in the many fields. Okay, including the these supercomputers have the deep learning ability. Okay, that means deep learning ability. It also can perform the virtual reality. Okay, visual learning. That means कि कोई भी चीज़ देख करके उसको क्या कर लेगा, रीड आउट कर लेगा कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. ओके, दैट मीन्स कि अगर इमेज मिलेगी तो इमेज से भी वो कंसिडर कर लेगा कि व्हाट इज दिस, यू कैन से द अबाउट विच द इमेज इज सेइंग. फाइन. And the graphic visualization also. So this is all about our Param Siddhi. Today, if you are just what classified, you can say we are just searching out the top 500 supercomputers of the world, then we will find that here the Param Siddhi AI, okay, and Pratyush and the Mihir. There is 3 supercomputer of India which is actually holding the place in top 500 supercomputer around the world. Okay, so the next one is here, Pratyush. The next one is the Pratyush. So Pratyush is also one of the fastest supercomputer in India and developed by the IITM Pune. Okay, IITM Pune, and in the year of the 2010, yes, IITM is stand for the Indian Institute of the Tropical Meteorology. Okay, and the government sanctioned the 400 crores after the development of this Pratyush supercomputer by the IITM. Even this is the Indian Institute, that means this is a government institute. Okay, so after the development of this Pratyush, the India is sanctioned the 400 crore rupees the grant for the build a new supercomputers with 10 petaflops of the computing capacity. Okay, that means the government issues the 400 crore. Okay, what this is rupees. Okay, INR. Okay, for the development of new supercomputer with the speed over 10 petaflop. Okay, with the speed above than 10 petaflop. Sorry. So under the guidance of the Surya Chandra Rao is आप कह सकते हो personality which is actually working in the field of the development of the supercomputer. ठीक है, so by the
year of 2017 the government have declared. Okay, this high end supercomputer is actually आप ये कह सकते हो कि the primary function of this supercomputer is that to predict the monsoon and their severity accurately. Okay, what is the function of? To predict the monsoon, to predict monsoon, to predict monsoon and their severity, and their severity, okay, accurately, accurately. Clear? So you know very well, and you know, because you guys are very wise personality. Okay, तो आप सबको पता होगा कि there are the several factors, okay, which is affecting the monsoon of India. ठीक है? So here the prediction of the monsoon and their severity, okay, this is actually predicted by the Pratyush computer. The Pratyush is working in the IITM, okay, and Pratyush is the world fourth fastest supercomputer deployed for the climate and weather research. अगर हम बात करें कि how many supercomputers are deployed for the climate and the weather research, so the Pratyush is actually holding the fourth position in top 5 supercomputers, top 5 fastest supercomputers for the purpose of the climate and the weather research. Okay, so Pratyush has recently become the India's second supercomputer to get the listed on the top 100 of the list of the world's top 100 supercomputers. So 70 अभी हमने वहाँ पे देखा था क्या था हमारा परम सिद्धि होल्डिंग द 63rd position. Okay, and Pratyush is actually now holding the 78th position. ठीक है, so 78th position. So the two supercomputers of India is actually holding the top 100 position, okay, around the world fastest supercomputers. Okay, so the machine is currently being used by the two government bodies, जैसे IITM पुणे and the नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग. ओके, नोएडा में है ये. क्या है? नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग. नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग. वेयर इज दिस? दिस इज इन नोएडा, यूपी. ओके, नोएडा में है ये. क्या बोलते हैं? नेशनल सेंटर, ठीक है, फॉर medium range weather forecasting. So here and IITM Pune, okay, the government institute is actually right now taking the advantage of the Pratyush. So Pratyush is in a operational at the two centers, okay, two government institute, the IITM Pune and the NCMRWF. Okay, chalo, the next one is the Mihir. The next one is the Mihir. Mihir is an Indian-based supercomputer. This is also developed by the IITM. ठीक है, developed by IITM, where? Pune. Okay, and cup in 2018. Clear? So the Indian supercomputer also bagged that 120th position in the list of top 500 supercomputers in the world. So this is holding the 120th position. Okay,
in top in top 500 supercomputers, okay, around the world. Okay, so now we can say that in the top 500 list, the three supercomputer of India is holding the position. The first one is the Param Siddhi AI, which holds the 63rd position. The next was the Pratyus for the 78th position. Okay, and here the Mihir. Okay, Mihir is actually holding the 120th position. Okay, under out of 500 supercomputers, top 500 supercomputers. Fine. Okay. आदित्य में हमें पढ़ लिया व्हाट इज आदित्य परम युवा वी हैव डिस्कस ओके द नेक्स्ट वन इज अ हियर वर्गो ओके वर्गो so Virgo is an IBM I Dataplex DX360 M4 based supercomputer developed by the IIT Madras. Okay, इतना जानो प्रोसेसर जानने की जरूरत नहीं है. दिस इज डेवलप्ड बाय IIT Madras. Okay, IIT Madras by the and in when it is developed in the year of 2015, not 18. 2015. Okay, so its main motto is to collect the satellite data. Okay, and the data that will increase the accuracy of the what? Accuracy of the weather forecasting. Okay, in the region. That means we know that the some of the satellites actually using for the purpose of the weather forecasting. Okay, so this supercomputers Virgo, okay, is used to collect the data. This is the actually main motives of the Virgo supercomputers to collect the satellite data that will increase the accuracy of the weather forecasting in the region. Okay, and this is actually enable the researchers to interpret the data of the previous cyclones and compare them with real time weather data to provide the better prediction. That means ki it is providing the information regarding the phenomena which have actually happened in the past, okay, including the cyclones. Okay, so it provides the data to the researcher, and the researcher is actually analyzing the conditions, the analyzing the current condition, okay, by the study of the previous data. Okay, so this is actually leading for the better prediction. Okay, so better prediction can be led by the use of the Virgo supercomputer. Okay, so here is supercomputers, that is next is the Param Shivaya. Okay, Param Shivaya. Param Shivaya. Clear? So Param Shivaya is also developed by, you know, Param series supercomputer is developed by the CDAC. Okay, CDAC is a Center for the Development of Advanced Computing. Okay, so in the year of 2019, the Prime Minister Narendra Modi was actually inaugurated. Okay, the new Indian supercomputer which is known as the Param Shivaya. Okay, and at the where IIT Varanasi. So this is established in the IIT Varanasi. Okay,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में ही है, IIT वाराणसी. ओके, so this Param Shivaya is inaugurated in 2019 by PM Modi. Okay, by PM Narendra Modi. Clear? So this is supercomputer which was developed under the country's National Supercomputing Mission Initiative, okay, which is started by the establishment of the CDAC. So CDAC is a what developmental body of the Param Shivaya. Okay, so actually the approx 32 crores of the cost, okay, have been consumed for the development and the research of the Param Shivaya supercomputers. And the newly made Indian supercomputer has the maximum capacity of the 833 teraflops. So the maximum speed of this Param Shivaya is the 833. Okay, 830 833 teraflop. Clear? Teraflop. तो CY is powered by the two Intel. चलो उसको प्रोसेसर पे नहीं जाएंगे अपन, ठीक है. एंड दिस इज यूज्ड बाय द मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है. इट विल बी will be used by meteorological डिपार्टमेंट. ओके, अच्छा आप सब सोच रहे होंगे कि मोस्ट ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स इज एक्चुअली used by the meteorological department, but why, what are the reason behind it? Or you can say actually this is used for the meteorological purposes, ठीक है. So friend, the thing is that today the environmental phenomena, you can say the climatic phenomena, ठीक है, you can say the meteorological studies, okay, it's a major concern, ठीक है. We know that by the climate changing conditions, okay, there is a changes in the environment, changes in the climates is happening, okay. So most of the disastrous phenomena is happened by the changes in the climate, okay, by the climatic changes. So the study of the climate change is very important. So that's why that's the reason the most of the supercomputers are actually using for the weather forecasting, or you can say for the meteorological purposes, ठीक है. तो दिस इज द, हाँ एक और सुपर कंप्यूटर है, द नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर विच इज नोन एज द पदम. पदुम, पदुम, ओके, नोन एज द पदुम. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर, ठीक है. एंड दिस इज डिप्लॉयड इन IIT दिल्ली. कहाँ पर ये डिप्लॉयड है? IIT दिल्ली में. फाइन. And this is the name, the 166th fastest supercomputer in the world and fourth in India. Okay, बोला जाता है कि पदुम इज अ ग्राफिक फोकस सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है. एंड दिस इज डिजाइन टू परफॉर्म द ग्राफिक्स इंटेंसिव ऑपरेशंस, ठीक. एंड और इसके बारे में क्या ज़रूरी है जानना? इट the institute uses this machine, actually the IIT Delhi is uses this computer, ठीक है, machine to the conduct research on various subjects like the deep learning deep learning, okay, data analytics,
Fine. Data analytics, computational physics, and many more. Computational physics and etc and etc. Fine. So these are the supercomputers. Okay, some fastest, or you can say the some important supercomputers of the India. ठीक है. Okay. So in the today the communication is actually based on the digital mode. Okay, so digital communication is the most modern and the revolutionary form of the communication system. Okay, in which the information signals are actually transmitted in the form of the what binary pulses. Okay, using 0 and 1. Okay? So we know that when we are just establish any communication, okay, between the two party, and there is a device is actually using for the communication purposes between two parties. Okay, so in this case the communication signal are transmitted in the form of what? Form of the binary numbers. Okay, binary numbers. The binary numbers are those number which is actually understood by the computers. Okay, this is also considered the computer language. Okay, so the 0 and 1 is the what? Binary numbers. Okay, so since computer also functions as the binary system, okay, so the entire digital communication can be easily handled by the computer. Okay, why? Because the communication signals is transmitted in the form of the binary pulses, and the computer can easily read out the binary pulses. Okay, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो केवल 0 और 1 की लैंग्वेज को क्या करता है? रीड करता है. ठीक है, उसी को समझता है. फाइन. Okay, so making it a faster and the error free form of the communication system the computers are actually using. Okay, so here the about we have to read about the cyber space. Okay, next topic is the cyber. Okay, so what is considered as the cyber space? देखो, साइबर स्पेस इज कंसिडर्ड एज अ, आप कह सकते हो कि एन इन्वायरमेंट, ओके, इन विच वी आर जस्ट transmitting, or you can say the data is just transmitted from peer to peer, or you can say from one party to another party by using the several types of the devices including the computer. Okay, चलो, तो हियर इज सम, आप कह सकते हो terms are given, okay, which is actually oftenly used in the cyber world. Okay, like जैसे cyber war. cyber war cyber war is today, this is not just comparatively to the ground war. Okay, अगर हम बात करें साइबर वॉर की, तो फॉर द टुडे, ओके, the scenario is actually continuously changing. ठीक है, is this is considered as a continuously process. ठीक है, being changed. तो अब जो वॉर हो रही है, राइट, वो ग्राउंड लेवल पे वॉर नहीं हो रही है. ठीक है, द साइबर वॉर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हो, सिस्टम ऑफ वॉर. ठीक है, या आप कह सकते हो कोई तरीका है ऐसा वॉर करने का. ठीक है, थ्रू विच अ कंट्री, और यू कैन से कोई भी एक पार्टी कह लो, कोई भी एक रोग नेशन कह लो, ठीक है, वो क्या कर सकता है, किसी भी कंट्री को कंप्लीटली क्या कर सकता है, डैमेज या कंप्लीटली उसको हार्म
कर सकता है. ओके, बाय द हैकिंग ऑफ द साइबर वर्ल्ड. ओके, बाय हैकिंग the cyber space of that particular country. So this is considered as the cyber war. Okay. In this, we have to be discuss about some terms. That means which kind of the weapons are using in the cyber war. Okay. So information technology resides and the rights on the actually cyber space. Okay. ऑल ओवर अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो दिस इज द रिसाइड्स, दैट मीन्स कि वहीं पर रहता है. रेजिडेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज कंसिडर एज द साइबर स्पेस. आफ्टर दैट द रिसाइड्स एंड द राइट्स ऑन द cyber space. The information technology resides and rights on the cyber space. Clear? Okay. So here is some terms are given. Okay, like the malware. Like the malware. Malware. ठीक. माल फंक्शनिंग समझते हो आप? माल फंक्शनिंग जो कंप्यूटर की माल फंक्शनिंग, कंप्यूटर के फंक्शंस को क्या कर दें? डिस्टर्ब कर दें. ओके, दैट काइंड ऑफ द, आप कह सकते हो कि एप्लीकेशंस, दैट काइंड ऑफ द सम डिजिटल, यू कैन से, डिजिटल ही कहना ज़्यादा ज़रूरी है. डिजिटल बग्स, वॉर्म्स और वायरसेस आर कंसिडर एज द मैल. ओके, उनको क्या बोला जाता है? मैलवेयर. तो मैलवेयर इज नथिंग. मैलवेयर मीन्स दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव और मैलिशियस सॉफ्टवेयर. ठीक है, द मैलवेयर इज कंसिडर एज द डिस्ट्रक्टिव एंड malicious software. Okay, that means if the malware is introduced in your system, so it can be destructive in nature for your computer. Okay, in which we have to discuss about the some viruses, some worms. Okay, तो इन सब के बारे में हमें क्या करना है? थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए चलना है. ओके, when the actually any types of the what, any types of the malware is detected by detected in the computers. Okay, so actually the cyber space, if we are talking about the cyber space of India, so any types of the attack, okay, in the cyber space, then there is a computer emergency response. ठीक है, रिस्पॉन्स टीम. ठीक है, रिस्पॉन्स टीम इन इंडिया. ओके, दिस इज नोन एज द सर्न इंडिया, और यू कैन से द सर्न IN. आई, ओके, सर्न IN. कहीं पे CERT भी मिलता है, ये कंफ्यूज मत होइएगा. CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम. दिस इज अ कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स इंडिया, टीम इंडिया. ओके, so this is considered the CERN. So the CERN, or you can say the computer emergency response team, is responsible to tackle the problematic complications in the cyber space. Okay, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को क्या किया है, ये डिस्क्राइब किया है. लाइक द फर्स्ट टर्म रिगार्डिंग द मालवेयर इज स्पैम. ठीक है, स्पैम देखा होगा ना आपने. आपके पास जब कोई कॉल आता है, तो आजकल ट्रू कॉलर है, तो बहुत सारे लोग उसको उसमें दिखाता है ट्रू कॉलर में कि 1000 समथिंग पीपल्स आर कंसीडर इट एज स्पैम. ओके, so this is the first one is the spam.
So spam is and the unsolicited and unwanted commercial email. ठीक है, spam is the unsolicited unsolicited and unwanted commercial email. Unwanted commercial email. ठीक, okay. And this is also considered as the simply electronic junk mails. Electronic junk mail. Okay. अच्छा. Why this is the unsolicited and the unwanted? Because you don't want to this type of mail. और आपको ये मेल जैसे आपके ईमेल पर ईमेल आईडी पर आपकी ईमेल आएगा, ठीक है, and when you are going to just open this email, okay, so it may be a kind of the virus, kind of the worm, kind of the spywares, okay, ये सारे काइंड ऑफ द मालवेयर है, ठीक, ये आपके सिस्टम को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं. इफ द स्पैम इज लाइक व्हाट, कुछ इकोनॉमिकली थ्रेट कर सके, तो वो इकोनॉमिकली थ्रेट भी कैसे, जैसे इट इट कैन बी हैक your when you are open this, it can hack your phone, okay, hack your cell phone, okay, so all the information regarding your banking details, ठीक है, is what hacked by this mail, okay, तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट भी क्या हो सकता है, साफ किया जा सकता है. फाइन, चलो, द नेक्स्ट वन इज द the next one is the phishing. The next one is the phishing. Is an electronic scam, ठीक है, that uses the fraud emails to direct a computer user to fraudulent website, illicit transfer of the money and the sensitive sensitive information. That means the phishing is like a क्या, ये एक तरीका का क्या, this is a kind of the electronic scam, okay. इलेक्ट्रॉनिक स्कैम, ठीक, जैसे आपको कोई चीज़ मेल कर दिया गया, सपोज दैट यू गॉट अ मेल, दैट इन द मेल द मेंशन इज दैट आपने कौन बनेगा करोड़पति से आपको 25 करोड़ की लॉटरी लगी हुई है, ठीक है, और उस पर क्या कह दिया जाएगा कि एक आपके नाम का, ठीक है, चेक और नीचे एक डुप्लीकेट साइन, ठीक है, किसका, अमिताभ बच्चन का, ठीक, वो करके आपके मेल पे भेज दिया जाएगा. फाइन, तो आप क्या सोचोगे कि हाँ ये किसी तरीके का क्या है, हमको रिवार्ड मिला है, ठीक है. सो अब आप जल्दी से फटाफट क्या करोगे, उस मेल को ओपन करोगे. देयर वॉज अ कॉन्टैक्ट नंबर इन मेल, यू जस्ट कॉन्टैक्ट दोज गाइज, और वो आपसे ऐसा बोलेंगे कि यस योर चेक इज़ रेडी नाउ, ओके, तो वी कैन पोस्ट योर चेक, बट बिफोर सैंक्शन ऑफ चेक, ठीक है, बिफोर पोस्टिंग द चेक यू हैव टू पेड सम सर्विस मनी, ठीक है, तो सर्विस मनी में वो आपसे डिमांड करेंगे कि सर यू हैव टू जस्ट पे द 50,000 रुपीज, ठीक है, 50,000 रुपीज. अब उसको सर्विस मनी बोलेंगे, सिक्योरिटी मनी, समथिंग लाइक दैट, वो एक कहानी बनाएंगे, क्लियर. एंड यू थिंक दैट कि हाँ तो मतलब कि अगर 50,000 दे करके 25 करोड़ का चेक मिल रहा है, ये घाटे का सौदा तो नहीं है ना, किसी के लिए नहीं होता. तो एट दिस कंडीशन वो क्या होगा कि आपने जैसे उनको 50,000 रुपये दिया, तो सारा का सारा लिंक ख़त्म, ठीक. दिस इज़ द वर्ड इज एक्चुअली एलिसिटिंग, दे एलिसिटिंग द ट्रांसफ़र ऑफ द मनी, ठीक है. तो इस तरीके से वो पैसे वैसे का क्या करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ स्कैम, ओके.
Next one is the adware. Adware. Adware is stand for the advertisement supporting software. ठीक है, this is the advertisement supporting software. ठीक है, advertisement supporting software. So it is kind of any software applications in which the advertising banners are displayed, okay, while program is running. ठीक, so it delivers the ads which can be viewed through the pop-up windows that appears on the computer screen. देखो इसमें भी बड़ा फ्रॉड होता है. तो ये एक तरीके का क्या है, जैसे आपने कुछ ओपन किया, उसमें एक ऐड चल रहा है. ठीक, ऐड कुछ भी हो सकता है. सपोज दैट कि आप अच्छा वो फाइंड आउट भी कर लेते हैं अगर आपके ये इतने एडवांस होते हैं कि पता चल जाता है कि आपने अभी रिसेंट में किस चीज़ के बारे में सर्च किया है. ओके, सपोज दैट इफ़ यू आर जस्ट सर्चिंग फॉर द सर्चिंग फॉर द गारमेंट्स, ओके, क्लॉथिंग, ओके. तो आपने जैसे उसमें क्लॉथिंग में आपने टी शर्ट को फिल्टर किया, आप टी शर्ट्स के बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ हो. ठीक है, तो वो करेंगे क्या कि आपको ऐसा ही एडवेयर आपके मोबाइल पे स्क्रीन पे क्या आएगा. ठीक, टी शर्ट्स के. ठीक, एंड सो काइंड ऑफ द टी शर्ट्स आर देयर एंड दे आर वेरी अट्रैक्टिव लुकिंग. ओके, वेरी अट्रैक्टिव, एंड द प्राइस वॉज जस्ट बिलो द 100 रुपीज़, 125 और 150 रुपीज़. ओके, तो यू गॉट द अट्रैक्टेड और आपको लगेगा कि यार 150 रुपीज़ में वी कैन गेट द व्हाट द 3D प्रिंटेड टी शर्ट. ओके, 3D प्रिंटेड टी शर्ट वो कितने में, 150 रुपये में. ओके, तो यू थिंक दैट कि यस दिस इज़ ओके. तो आपने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, ऑर्डर किया. ओके, ऐड टू कार्ट करके आपने यू प्लेस अ ऑर्डर, एंड व्हेन यू आर प्लेसिंग अ ऑर्डर देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ द cash on delivery. Okay, COD option is not available. Fine. So you just think that this is just as 150 rupees. Okay, तो पहले पे करने के लिए बोल रहा था, आपने जस्ट अपना फटाक से डेबिट कार्ड उठाया, क्रेडिट कार्ड उठाया, एंड यू जस्ट पेड द 150 रुपीज. ओके, एंड आफ्टर दैट when you paid the 150 rupees, after that the balance is deducted from your account and you will not get further any types of the मैसेजेस रिगार्डिंग दैट ऑर्डर. ठीक, उसके बाद आपने सपोज कि आप यू आर वेरी मच क्लेवर, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया उसका कि यस यू हैव प्लेस ऑर्डर. आपने ऊपर ये भी देख लिया कि विच साइट इज ओपन दिस थिंग, साइट भी आपने देख लिया. अब उस साइट को जब कभी भी आप सर्च करोगे तो साइट ओपन ही नहीं हो. क्लियर? तो व्हाट इट्स अ काइंड ऑफ द एडवेयर. फाइन. तो अभी आपके लिए 150 तो नहीं ज़्यादा है, बट सपोज दैट कि 150 100 लोगों ने 150 भेज दिया उसको, है ना, तो उसके पास कितना कमाई हो. ठीक, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्कैम. ओके, so there is the next one is the like some malware is here, types of the some malware. Okay, ऐसा समझो. Malware. Okay, so malware is here. This is a malicious or the destructive software. ठीक, जैसा हमने पहले बात किया था, malicious और destructive software. Clear? Malicious and the destructive software. Fine. So here is the form of the in the form of the like the computer viruses. Okay, the computer worms, computer bugs. Okay, so this kind of the malware can actually destruct your complete computer system. Okay, this is destructive in nature. So here is some types of the malwares are here, like the computer virus.
कंप्यूटर वायरस। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग आप लोग ना ये कंप्यूटर यूज़ कर रहे होगे ना एक बार सब कंप्यूटर वायरस के क्या हुए होगे, शिकार बने होगे, ठीक है, कंप्यूटर वायरस के, इंक्लूडिंग मी, मैं भी बन चुका हूँ। फाइन, ओके। तो computer virus, this is a very small program which is written with the intention of the affecting badly the working of the computers. Okay, when the virus is reached into the computers, then it affects the affecting the working of computer. Okay, suppose that introduced the virus is introduced in your PC. Okay, so after the introduction of the viruses in your PC, when you go to the just start your computer, ठीक है, तो कंप्यूटर स्टार्ट किया आपने, अब विंडोज ओपन हुआ, फिर फ्लिक करके तुरंत क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक, फिर ओपन होगा, फिर क्लिक करके क्या हो जाएगा, क्लोज कर जाएगा। ओके, तो इट इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। या मान लो कि with the first time the computer is open, but suppose that if you are just placing some passwords, okay, you have just placed some password to open your window, open your computer, okay, तो अभी क्या है, जैसे आपने किया, तो जहाँ पे पासवर्ड टाइप करते हैं ना, ठीक है, उस पूरे उसमें क्या बोलते हैं, पासवर्ड वाले इस प्लेस पे क्या होगा कि बहुत रैपिडली क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ पासवर्ड उसमें क्या हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे करके पूरा एकदम टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा स्पीड से। ओके, द काइंड ऑफ वर्ड, काइंड ऑफ द वायरस। ओके, इट इज एक्चुअली अफेक्टिंग द वर्ड वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर्स। ओके, उसकी स्पीड को भी क्या कर देगा, स्लो कर देगा, किसके, कंप्यूटर के वर्किंग स्पीड को। फाइन, दिस इज एक्चुअली अफेक्टिंग बैडली, अफेक्टिंग वेरी बैडली द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर्स। इट मे इरेज द फाइल्स and can even make the computer run slow, ठीक है, कंप्यूटर रन स्लो। इट कैन ऑल्सो मेक द डिलीशन ऑफ द फाइल्स एक्चुअली, ठीक है, जैसे आपने कुछ डिलीशन रखा। हाँ, ये एक चीज़ और, सम वायरसेस आर अवेलेबल विच इज़ एक्चुअली मेकिंग द शॉर्टकट ऑफ द फाइल यार, ठीक है, दैट मीन्स कि उसमें मतलब कि फाइल्स के शॉर्टकट बना देंगे वो। जैसे आपने उसको जैसे ही ओपन किया वो ओपन ही नहीं हो रहा है, जो आपने कभी उसको सपोज दैट इफ द फाइल इज इन द फॉर्मेट ऑफ द वीडियो, ओके, तो जब आपने पहले उसको देख रखा है कि हाँ दिस द वीडियो इज हियर, द पिक्चर इज हियर, when the virus is introduced and you are just going to click the on that particular file, then the file is actually corrupted. Okay, this shortcut is formed of that file, ओपन ही नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है उसमें, खाली पड़ा हुआ, ठीक, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वायरस। ओके, so the reason that is program are called the virus is that they spread to the other machine. Why this is also considered the virus, क्यों बोलते हैं इसको। अब देखो, जैसे कोई भी पीसी है जिसमें वायरस है, ओके, और when you are just transferring the data from that PC to another PC by using what, by using data cable, by using what, आपको वो जाता है पेन ड्राइव आता है, ओके, by using the hard disk, okay, so in that case the virus is transferred from that infected computer to another healthy computer। infected computer कहना ठीक नहीं है, वो वायरस का नाम आया तो मैं बोल दिया, लेकिन वो जो आपका जो अफेक्टेड कंप्यूटर है, ठीक है, उससे वायरस निकल के किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, किसी दूसरे कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर में भी क्या हो सकता है, स्प्रेड आउट हो सकता है। तो दिस इज द रीज़न वाई दिस इज कंसिडर्ड द वायरस। ओके, ठीक, एंड ईमेल और यू कैन से, हाँ, सबसे ज़्यादा वायरस आते कब हैं, व्हेन योर सिस्टम डजेंट हैव द एंटीवायरस। ओके, आपके सिस्टम के पास क्या है, एंटीवायरस नहीं है, एंड यू आर जस्ट सर्चिंग anything, any application, about any application on the what, on the Google, okay, on the Chrome, and there is unauthentic source is also available, and mostly the unauthentic source of that particular application's downloading options are the spam, or you can say are the malware kind of virus। आपने जैसे उसको इंस्टॉल किया तुरंत आपके कंप्यूटर पे इफेक्ट दिखा, फटाक से तुरंत कंप्यूटर बंद, क्लोज। So this is the word, this is the kind of, okay, okay. The next one is the computer worm. The next term is the computer
worm. Okay. So computer worm is nothing. This is a malicious or the destructive program. This is also malicious or destructive program which is self-propagating, that it multiplies or multiples by its own and self-installing, harder to determine and erase, and eats up the entire disk space or memory. देखो ये पूरा का पूरा क्या करेगा ना कि this is the having the capability of what, the computer worm having the capability of the self installing, or you can say the self also self propagating. दैट मीन्स अगर जिससे कोई एक वॉर्म का इंट्रोडक्शन हुआ है तो आफ्टर सम टाइम्स ये कन्वर्ट हो जाएगा बहुत सारे वॉर्म्स. ओके फाइन. और देयर इज नो नीड ऑफ कमांड गिवन बाय द यूजर टू इंस्टॉल दिस. ठीक है, बिकॉज दे हैव द सेल्फ इंस्टॉलिंग कैपेबिलिटी. ओके. और वायरस तो थोड़ा ठीक था, बट दिस कैन एक्चुअली इरेज द कंप्लीट डिस्क स्पेस. ओके, इन योर पीसी द हार्ड डिस्क इज यूजिंग एक्चुअली. ठीक है, हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं. ठीक, तो हार्ड डिस्क को पूरा का पूरा क्या कर देगा, ये इरेज कर देगा. पूरा विंडोज़ को क्या कर सकता है, ये बर्बाद कर सकता है. फाइन. ओके. सो दिस इज कंसिडर द कंप्यूटर worm. The next one is the Trojan. Trojan. Okay. So Trojan, what is Trojan? Trojan is also a malicious program that comes to the system disguised as useful application program, and when opened, the Trojan start executing the tries to destroy the files. For example, it may come as a program to read our computer of virus, but instead introduce viruses into our computer. That means कि ये भी एक तरीका क्या है, malicious program है. Okay, and this is the disguised as a useful application program. ठीक, कोई useful application आपने program ले मतलब किया, application लिया. ठीक, and we are just going to open this, the Trojan start the executing and tries to destroy the file. ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, इसका एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा. व्हाट इज द एग्जीक्यूशन? दैट मीन्स कि इट इज स्टार्टेड देयर एम. ओके, एंड द एम इज टू डिस्ट्रॉय द फाइल्स ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द स्पाईवेयर. The next one is the spyware. Okay, तो spyware, अब देखो, spyware is actually computer software installed. ठीक है, secretly. ठीक, it is a software. ठीक है, installed in computer secretly. ओके, दैट मीन्स चुपके से कोई क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा ऑन अ पीसी. ओके, एंड थ्रू द यूजर द इंटरनेट कनेक्शन दैट सीक्रेटली मॉनिटर्स. ठीक है, मॉनिटर्स द यूजर बिहेवियर एंड द ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम द कंप्यूटर बैक टू द अनएथिकल हैकर. अभी इस हैकर ने क्या किया कि ही जस्ट इंस्टॉल्ड अ स्पाईवेयर. ठीक है, in the PC. Okay, when the user is open the PC, ठीक है, all the data is automatically start to transfer to the hacker. ठीक है, जो भी आपके कंप्यूटर में डेटा होगा वो पूरा का पूरा शेयर हो जाएगा उस हैकर्स को. ओके, so this kind of spyware is considered as the this kind of the malware is considered the spyware. Okay, so these are the some what these are the some terms are given which is considered as the malware. Okay, so now here
we have to also discuss about the examples of the some digital communications. So we can consider the example of digital communication. डिजिटल कम्युनिकेशन. तो डिजिटल कम्युनिकेशन और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, लाइक DTH. ठीक है, DTH. उसके अलावा इंटरनेट टेलीफोनी. इंटरनेट टेलीफोनी. वाईफाई कॉलिंग की फैसिलिटी आज अवेलेबल है हमारे पास. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ वर्ड डिजिटल कम्युनिकेशन. एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न. इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न. ठीक है, IPTV बोलते हैं इनको. ठीक, तो अभी एक एक को हमको यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलना है. जस्ट अ सेकेंड. वी हैव द सम OTTs ऑल्सो. ठीक है, ठीक है. OTTs दैट मीन्स ओवर द टॉप. ओके, ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज. स्ट्रीमिंग सर्विसेज. ओके, over the top OTT services including the what, like the Netflix. Okay, Netflix. Yeah, Prime, Amazon Prime, Prime Videos. Yeah, Hotstar. Okay, G5. G5. Okay, बहुत सारे हैं ना इसमें. उल्लू है, ऑल दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या है, उल्टा सीधा बहुत सारे. ठीक, तो दिस इज द, these are the what, these are the OTT, the over the top streaming. This is also a type of what, type of the digital communication. Digital communication, actually this is providing the what, providing the data. Okay, तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हुए चलना है. ठीक, बात करते हुए हम लोग चलेंगे. फाइन. तो द फर्स्ट वन इज हियर, दिस इज द DTH, यू कैन से द डायरेक्ट टू होम सर्विसेज. ठीक है, जब डायरेक्ट टू होम सर्विसेज फर्स्ट टाइम आया था ना, द गवर्नमेंट हैव एक्चुअली प्रोवाइडेड द DTH सर्विस. ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट, आप कह सकते हो कि चार्ज फ्री डिश टीवी था ये. ठीक है, DTH सर्विस. DTH is stand for the direct to home. Direct to home. ठीक, so it is actually digital television. ठीक, digital television delivered on the television through the high speed internet broadband connection. अरे यार क्या बता दिया मैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल बता दिया आपको, सॉरी. हाँ, इट इज अ सिस्टम ऑफ टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस. DTS is what, system of the broadcasting service. Television broadcasting service. And we know that the government of India actually provided the DTS service for the all the citizen of the India. Okay, and where the television signals are the transmitted directly to the viewers. Okay, so side stepping the cable operators. Okay, जैसे we know that if we are just taking the dish TV connection, okay, so for the dish TV connection there are so many cable operators. ठीक है, बहुत सारे क्या हैं, केबल ऑपरेटर्स हैं. फाइन, दे आर एक्चुअली चार्जिंग द फीस फॉर द डिश टीवी कनेक्शन. ठीक है, आपने देखा होगा कि वो बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे आएंगे तो बहुत सारा. अच्छा, अब तो बहुत अच्छा हो गया. क्यों अच्छा हो गया, क्योंकि हमारा जो क्या बोलते हैं उसको यार, ट्राई है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है,
और दिस इज माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये सारे इन लोगों ने क्या किया ना कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अपना क्या बोल सकते हैं उसको कि एक कंट्रोल, यस कंट्रोल क्रिएट करके रखा है फॉर द फॉर द डिश टीवी कनेक्शंस। और अभी क्या है ना कि बहुत मतलब मनमानी तरीके से वो नहीं मतलब चार्ज कर सकते हैं। बट पहले क्या होता था, मेनी ऑफ द केबल ऑपरेटर्स आर प्रोवाइडिंग एक्चुअली द डिश टीवी कनेक्शन। ओके, दे आर पेइंग टू द गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर दिस डिश टीवी कनेक्शन एंड ठीक है, दे आर पेइंग अ सर्टन अमाउंट, बट दे आर एक्चुअली आप क्या बोल सकते हो उसका मतलब जो जाके कस्टमर से ये लोग चार्ज करते थे मनमानी तरीके से, ठीक है, किसी से कुछ भी चार्ज कर, ठीक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली प्रोवाइडिंग दिस टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, ठीक है, एंड दिस इज द सर्विस विच इज प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द व्यूअर्स। ओके, अगर आपके घर में टीवी है तो यू कैन जस्ट take the DTH services, okay, in which the more than 100 channels are free. Okay, that means there is no recharge, no extra charge would be paid for that 100 plus channels. Okay, so here in the DTH system, the service provider launches together a group of channels in codified or scramble form to receive by the KU band transponder of GSAT or communication satellite। ठीक है, देखो आ गया ना यहाँ पे when we are just talking about what communication satellites, okay, GSAT, okay, geosynchronous satellites, ठीक। तो हमने वहाँ पे बात किया था कि the transponder are using in the satellites, transponder is actually stand for the transmitter and the responders, okay। तो KU band transponder is the more advanced transponder considered, ठीक है। So here this GSAT or communication satellites from where these signals can be easily downlinked by the viewers, okay। तो यहाँ पे मतलब जो GSAT से जो सिग्नल आएगा वो डायरेक्टली किसको, व्यूवर्स को भेज दिया जाएगा, ठीक, बाय यूजिंग द लेस देन 1 मीटर इन डायामीटर डिश एंटीना। तो आपने देखा होगा पहले जो डिश लगती थी ना, जो डिश टीवी लगती थी, तो जैसे वो होता ना घर, अब जैसे सपोज दैट कि वो होता है अम्ब्रेला होता है, राइट, अम्ब्रेला। तो दैट एंटीना वाज अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स, लेकिन वो इतना बड़ा होता था कि उसमें करीब 20-25 अम्ब्रेला आ जाए। ओके, दैट मीन्स कि इट्स अ वेरी मतलब इन अ वेरी वाइड डायामीटर, ओके, द डिश एंटीना। बट इन द DTH सर्विसेज, ठीक है, द एंटीना विच इज यूजिंग दिस इज लेस देन 1 मीटर डायमीटर। आपने देखा होगा एक उसकी टिन की या आप कह सकते हो लोहे की एक छोटा सा ऐसा क्या होता है एंटीना होता है तस्तरी जैसा, ठीक, इसको ले जाके यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है, फाइन, यहाँ से ऐसे कुछ लाइक दिस। ओके, so this would be a this antenna, ठीक, for providing the DTH service, and these signals can be made compatible to the television viewing by using a smart card and a decoder, ठीक है, the combination which helps in the unscrambling the codified signal। the technology of the DTH, ठीक है, ensure highest quality of voice video as it uses the digital form of communication system। DTH services also provide the various value-added services such as internet facility, video conferencing and the telemedicine। ठीक है, देखो अभी क्या है ना कि जब गवर्नमेंट ने ऐसा DTH सर्विस निकाला ना तो बहुत सारी कंपनीज ने भी अपना DTH सर्विस स्टार्ट किया, ठीक, जैसे द एयरटेल का सर्विस, ठीक, द सर्विस ऑफ द एयरटेल। तो एयरटेल टीवी, ओके, एयरटेल इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग द DTH सर्विस, ठीक है, एंड दे आर गिविंग द स्कीम्स ओवर स्कीम, ओके, द स्कीम ओवर स्कीम। अगर किसी को एयरटेल का सर्विस लगाना है, ठीक, तो वो ऐसा कुछ मतलब कुछ समथिंग कुछ प्रोविजंस, सम प्रोविजंस आर देयर, ठीक है,
बोलते हैं कि आपको एक एयरटेल का नंबर दिया जाएगा, ठीक, एंड 1 ईयर आपको 5 नंबर्स पे फ्री में कॉलिंग की फैसिलिटी दी जाएगी, ठीक है। या बहुत सारा होगा कि अगर आप कनेक्शन लेते हो तो यू विल बी प्रोवाइड द फ्री डेटा, ओके, फ्री डेटा फॉर द सर्फिंग, ओके। तो मतलब इंटरनेट फैसिलिटी टाइप, ठीक। तो ये बहुत सारी चीज़ें, क्या मतलब बहुत सारी ना कंपटीशन बढ़ गया, ठीक। तो फॉर द कंपटीशन टू, आप ये कह सकते हो, to stand in the market, the actually companies are providing the different types of the several types of the offer to the viewers, okay. So this is the DTS services, ठीक। तो आज मतलब हर घर में लोग DTS का यूज़ कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट इज द इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक द फोन कॉल्स, ठीक है, यूजिंग वॉइस ओवर, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल and program which convert the voice signal from a telephone into a digital signal and signal that travels over the इंटरनेट, ठीक है। तो बहुत सारे अब जैसे इंटरनेट कॉलिंग की सर्विसेज लाइक द, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस ऐप आ गए हैं इंक्लूडिंग द व्हाट्सएप, ओके। फेसबुक इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग द वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी, ठीक है। इंस्टाग्राम इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग, ठीक। टेलीग्राम इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन विच इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग द इंटरनेट कॉलिंग फैसिलिटी, ठीक। तो इंटरनेट टेलीफोनी की जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक। नेक्स्ट वन इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न, IPTV, ठीक है। तो IPTV is the digital television, fine, and delivered on television through high speed internet broadband connection, okay. That means now the television services will be provided by the internet connection, by the internet connection. In this service, channels are encoded in the internet protocol format and delivered to the television through a set top box, okay। तो अभी क्या है कि सेट टॉप बॉक्स एक रखा रहेगा, उस सेटअप बॉक्स को क्या होगा कि उसमें जब भी कभी आप जब रिचार्ज कराओगे तो दे विल प्रोवाइडेड द IP एड्रेस, ओके, एंड आफ्टर द रिसीविंग द IP एड्रेस, ओके, द चैनल्स आर एक्चुअली इनकोडेड इन द फॉर्म ऑफ दैट IP एड्रेस, ठीक है। तो नाउ यू कैन इजिली एक्सेस दैट चैनल्स, ठीक। तो IPTV कन्वर्ट्स द टेलीविजन सिग्नल्स इनटू स्मॉल पैकेट्स ऑफ द कंप्यूटर डेटा like any other form of the online internet traffic such as electronic mail and web page. The quality of the digital video and the audio is much better compared with the traditional analog television, okay। ऑब्वियस सी बात है कि क्वालिटी इसमें क्या हो जी बहुत ज़्यादा इन्हांस कर जाएगी, किसकी क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ द ऑडियो एंड द वीडियोज़, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल्स दैट द व्यूअर्स may be able to look up the player's history by watching a game. They also may be able to schedule the recording of their favorite program when they are not at home, ठीक है। तो ये इंटरनेट की फैसिलिटी है, जैसे अगर आप घर पर नहीं हो तो देयर इज़ अ फैसिलिटी इन योर टेलीविज़न दैट यू कैन रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर एपिसोड, ठीक है। तो अब जब जब भी कभी वापस आओगे तो आपका फेवरेट प्रोग्राम जो है सास भी कभी बहू थी, समथिंग लाइक दैट, ओके, वो कभी क्या हो जाएगा, मिस नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न, ठीक। चलो, ओके। So these are the some terms are given regarding the digital communication, okay।
some topics are here which we have to discuss. Okay. अच्छा, ये कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द मोबाइल फ़ोन्स. ओके. इसमें हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द जीएसएम, वी विल टॉक अबाउट द सीडीएमए. क्योंकि आपने देखा ना, सीडीएमए सिम, पहले सीडीएमए सिम्स आते थे, अभी क्या है, अभी जीएसएम ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, जीएसएम. वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द जनरेशंस ऑफ द what मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी और मोबाइल सर्विसेज. जैसे आपने देखा कि 1G आता था, 2G आया, 3G आया, 4G आया, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 5G. ओके, तो उस पर ही बात करेंगे. बट बिफोर दैट वी विल स्टार्ट द क्वांटम कंप्यूटिंग. ठीक है, द बेस्ट टॉपिक ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग की बात करेंगे. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर. सो अब हम सबसे पहले बात यहाँ पे करेंगे अबाउट द क्वांटम कंप्यूटिंग. ठीक है. Computing is what? Computing, you guys very well know about the computing. Computing is storage, retrieves, and the processing of data. Okay, is considered as the computing. Fine. Chalo. Now we will just discuss about the quantum computing. ठीक. But before starting the quantum computing, we will just discuss about the what is the quantum. What is the quantum? Okay. And quantum is actually the thesis of the physics. ठीक है. And when we are just thinking about that, what is the meaning of the quantum? So quantum means very teeny particles. Okay. If you are just talking about the quantum particles, so it is considered as a very teeny particles. Okay. And this is actually this quantum computing is actually working on the theory of the quantum physics. Working on the theory of the quantum physics. Okay. Okay. So what is the quantum physics? Listen. In the quantum physics, when we are just talking about the quantum physics, so quantum physics is a part of physics, okay, in which we are just creating, or we are just understanding about, we are just creating our understanding, okay, about the some quantum molecules. Okay, some quantum molecules, including the quantum molecules, including the atoms, okay, electron, proton, neutron, okay, electron, proton, neutron, and another subatomic molecules. Subatomic molecule. Okay, so this will be considered as the quantum physics. Okay, actually the quantum physics is started, okay, or you can say the base of the quantum physics is actually created by the scientist, name was the Max Planck. क्या नाम था उनका? मैक्स प्लांक. प्लांक कांस्टेंट पढ़ते हो आप ना, प्लांक कांस्टेंट. ठीक है, उन्हीं मैक्स प्लांक की बात हो जाती. तो मैक्स प्लांक in the year of 1900, 14 September, ठीक है, 14 September and 1900, the first time the Max Planck was given the term of the quantum physics.
और जो उसकी बात कर रहे हैं ना, जो बेस बनाने की, ओके, तो दिस इज एक्चुअली मैक्स प्लांक इज एक्चुअली credited for the coin the quantum physics. ओके, ओके, एक्चुअली उन्होंने एक ऐसा कुछ ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर बात किया. व्हाट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन? कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी मटेरियल होता है, ठीक है, तो इट इज एक्चुअली emitted the some electromagnetic radiation. Okay, so this is considered something black body radiation. Okay, and according to the hypothesis of the Max Planck, okay, he is given that light and another electromagnetic energy, okay, another, ठीक है, म- म- hmm, the flow of the light and the another electromagnetic energy is actually in a packet form. That means in a small packet form. ठीक है, एंड उसी को उन्होंने क्या बोला, बाद में उसी को कंसिडर किया गया कि दीज स्मॉल एनर्जी पैकेट इज कंसिडर एज द फोटॉन्स. क्या कहा गया? फोटॉन. क्लियर? ओके. एंड फॉर मेकिंग दिस hypothesis, the Planck is actually awarded by the Nobel Prize also. ठीक है, and there is a revolutionary, you can say there is a revolution happens in the, आप कह सकते हो कि thought of this quantum physics, when the greatest scientist name was the Einstein. Okay, Einstein actually giving the photoelectric effect of the Einstein, ठीक है, photoelectric effect of the Einstein after the making understanding about this quantum physics. ठीक है, एंड अगर हम ऐसे समझें कि what is the quantum, okay, so Max Planck is actually told that the energy is flowing in a small patches form, or you can say the packet form. Okay, and these actually a single packet of that energy is considered as the quanta. Okay, consider as the quanta. Fine. Okay, and he said also that this quanta is actually depend on the frequency of the light. If you are just talking that there is a light, light यहाँ पे जल रही है, तो यहाँ पे जो प्रकाश या लाइट जो जा रहा है, ठीक है, इस केस में जो एनर्जी चल रही है, ठीक, तो एनर्जी इन द फोटोनिक फॉर्म. ठीक है, एनर्जी इज इन द फोटोनिक फॉर्म. फाइन. ओके. तो some phenomena, or you can say this, some phenomenal research are here, which is actually justifying, or you can say which is actually carrying a revolution in the quantum physics. Okay, like the dual nature of the what matters. ठीक है, and especially in the case of electron, here is the dual nature of material. According to this theory, in the universe, all matters, all materials are in are in two forms. Two forms. Okay, the in the form of the particles and in the form of the waves.
Clear? Clear? In the form of the particles and in the form of the wave. That means कि अगर कोई भी मटेरियल है यूनिवर्स में, फाइन, तो वो मटेरियल पार्टिकल फॉर्म में भी अवेलेबल है और वेव्स फॉर्म में भी अवेलेबल. दैट मीन्स at a time the material is behaving like a particle as well as like a wave. Fine. Okay. देखो, in the case of the electron, okay, in the case of the electron, in the case of the electron, and according to the dual nature of the electron, it is stated that electron is found in the particle form and waveform at same time, at same time. That means एक ही टाइम में क्या है, ये वेव फॉर्म में भी है और पार्टिकल फॉर्म में भी अवेलेबल है. विच दिस इलेक्ट्रॉन. ओके. अच्छा, आफ्टर दिस there is the law which is known as the principle of the uncertainty of the Heisenberg. Okay, the principle of the uncertainty of the Heisenberg. That means the Heisenberg was a scientist who said that at the same time, ठीक है, at the same time, this is not possible to detect the phase, or you can say the state, as well as the velocity or speed of the electron. ठीक है, उन्होंने कहा कि एक ही टाइम में इलेक्ट्रॉन की स्पीड और उसके स्टेट दोनों की बात या एक साथ दोनों को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है. तो दिस इज द uncertainty law of the Heisenberg. Okay, so these actually dual theory is also a what the theory this theory is a greater revolutionary action regarding the quantum physics. ठीक है, so this is the actually basic of the quantum physics. Okay, now when we are talking about the quantum computing, okay, what should happen in the normal computing? You can say what should happen in the normal computer. ठीक, देखो, नॉर्मल कंप्यूटर की बात करेंगे हम. फाइन. द नॉर्मल कंप्यूटर इज एक्चुअली स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड रिट्रीविंग द डेटा इन द बिट्स. किसमें? इन द बिट्स. बट इन केस ऑफ द quantum computer, the data is stored in the qubits. Qubits. That means several subatomic particles are making together the bits. Okay, but the qubits are what? Qubits are electron, photons, etc. Okay, that means here the data would be stored in the qubit form. Okay, तो देखो, ये बिट्स में है और ये क्यूबिट्स में है. ओके, दैट मीन्स इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी, स्टोरेज एज वेल एज द स्पीड कैसी होगी? हाई होगी. ठीक है, तो दिस इज स्टोर्ड इन द qubit form. The quantum computers, okay, storing the data in the qubit. Okay, चलो. So अगर हम बात करें कि what is the quantum computing, ठीक, quantum
quantum computing. Fine. Okay. So quantum computing is the area of study focused on the developing computer technology based on the principle of the quantum theory, ठीक है, which explain the nature and behavior of energy and matter on the quantum, that means atomic and the subatomic level. Okay, that means this quantum computing is using the qubits, ठीक है, for the data storage. Okay, so quantum computers encode the information as quantum bits or qubits, which can exist in the superposition. Okay, which can exist in the superposition. Okay, so for the quantum computing, the quantum computer is mandatory. Quantum computer is mandatory. Okay, and this quantum computing is actually carried the operation of the quantum cryptography. ठीक है, किसकी? क्वांटम cryptography. Okay, so qubit represent the atoms, ions, photons or electrons and their respective control devices that are working together to act as computer memory and a processor. Okay, that means here the qubits, or you also can consider the what? Consider the electron. Okay, ions, photons. ठीक है. ओके, तो ये क्या एक तरीके का कैसे काम करेंगे ये? दिस इज एक्ट्स एज अ कंप्यूटर मेमोरी एंड एज अ प्रोसेसर. ओके, दैट मीन्स कंप्यूटर मेमोरी की तरह भी काम करेंगे क्यूबिट्स जो होते हैं. तो डेटा वुड बी स्टोर्ड इन द क्यूबिट फॉर्म. ठीक है, क्यूबिट फॉर्म. तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज दिस subatomic particles are exist in the superposition, in the stage of superposition. Okay, so here because a quantum computer can contain these multiple states simultaneously, if has the potential to thousands of the millions. Okay, and it can also make a powerful supercomputers. Okay, अगर हम क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करें या क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, तो बाई द एप्लीकेशंस ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स, most powerful supercomputers can be invented. Okay, or can be developed by using the quantum mechanics. ठीक है, so what is the use of the quantum computing? Okay, और क्वांटम कंप्यूटर, इसका क्या यूज हो सकता है? यूज और application. Quantum computer could quantum computer could spur the development of new breakthrough in the science, medication, to save lives, machine learning methods to diagnose illness sooner, material to make more efficient device, and the structures, financial strategies to line well in the retirement, retirement, and the algorithm to quickly direct resources such as the ambulances, etc. and etc. That means the applications of the quantum computers in the field of medicine. Okay, the field of medicine, in the field of science. Okay, you can say this is also having the capability of the machine learning method.
machine learning method. Okay, machine learning method to diagnose the illness, to diagnose the disease causes sooner, मतलब rapidly, जल्दी से जल्दी. Okay, sooner, and material to make more efficient device. Okay, material to make more efficient devices. Okay, and structure financial strategies, devices, and structure financial strategies to line well in retirement, and algorithm to quickly direct resource such as ambulances etc and etc, such as ambulances. ठीक है, जैसे इसमें हम बात किए कि किसी भी तरीके का ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स होगा, ठीक, तो ये किसी भी तरीके के ऑपरेशंस को बहुत ही क्या करेगा, रैपिडली डील करेगा. ओके, एंड दिस इज more safer for what? Because the data is actually what? The data is actually stored in the qubits. Oh, okay, you can say in the subatomic level. Clear? Okay, so quantum computing का जो applications है, this is also application, the quantum computing is also applicable in the process of the quantum cryptography. In quantum cryptography. Okay, what is the quantum cryptography? By using the quantum physics, or you can say quantum mechanics, the process of the cryptography. Cryptography means वही हमने जो बताया था ना कि if you just sending the plain text, the text is converted into the cipher text which is encrypted. Okay, and after the decryption of that cipher text, the receiver get the plain text again. Okay, so this is considered as the cryptography. Okay, so by using the quantum computing, or you can say the quantum computers, the cryptography is done, which is considered as the quantum cryptography. ठीक, करेंगे इस पे बात, हम कल करेंगे इस पे बात कि what is considered as the quantum cryptography. ठीक है, so these are actually about the what, about the quantum computing. ठीक, क्वांटम कंप्यूटिंग में केवल एक चीज़ का हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इन द क्वांटम कंप्यूटिंग वी आर यूजिंग द क्यूबिट. ओके, क्यूबिट फॉर व्हाट? फॉर द स्टोरेज, रिट्राइव्स एंड द एनालिसिस ऑफ द डेटा. ठीक है, एंड द नॉर्मल कंप्यूटर वी आर जस्ट यूजिंग द बिट्स. ठीक है, फॉर स्टोरेज एंड रिट्राइव्स ऑफ द डेटा. क्लियर? ओके, कल जो है आपका जो क्लास में वी विल डिस्कस, कल बोले तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सम रिमेनिंग टॉपिक इज हियर इंक्लूडिंग द क्वांटम क्रिप्टोग्राफी. ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द quantum, sorry, cryptocurrency. We will discuss about the cryptocurrency. ठीक है, and after that we will discuss about the blockchain technology. ठीक है, blockchain technology, then we have to also discuss about the artificial intelligence. Okay, artificial intelligence is this is actually topic of the what? Topic of the robotics. ठीक है, so robotics, in the robotics chapter we have to also discuss about the artificial
intelligence. After the completion of this information technology chapter, we will start the new chapter. And बहुत छोटे छोटे दो चैप्टर बचे हुए हैं. The first one is the nanotechnology, okay, and second one is the robotics. ठीक है, तो nanotechnology and the robotics we will discuss further. Okay. हाँ, one more thing is here also remaining in the information technology. We have to discuss about the mobile technology. ठीक है, तो उस पर भी हम बात करेंगे about the mobile technology. ठीक, कुछ आपका इसमें जो अभी तक डिस्कस किए इसमें कुछ रहा तो नहीं है? Supercomputer we have covered. Okay, all the wireless communication system also we have covered, including the Bluetooth, Wi-Fi and the WiMAX, Li-Fi. Fine. The wired communication system the also covered, like the copper wire and the optical fibers. Okay. LAN, MAN, WAN we have discussed. IP address we have discussed. ओके, आई थिंक कि कुछ बच नहीं रहा है आपका. ठीक है, तो हियर इज जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हमारे, रिमेनिंग टॉपिक्स में वी विल कवर द व्हाट, मोबाइल टेक्नोलॉजी. ओके, मोबाइल टेक्नोलॉजी. तो इसमें हम थोड़ा सा इसका क्या करेंगे, इस डेवलपमेंटल फेज वी विल डिस्कस अबाउट द मोबाइल टेक्नोलॉजी. ओके, फ्रॉम फ्रॉम 1G to 5G. Okay, first generation to fifth generation. Okay, and today we are just looking towards the 5G technology. Okay, so 5G technology is a more advanced technology, and after the 5G technology we have to also discuss about the IoT. What is the IoT? This is the Internet of Things. Okay, so about the Internet of Things we have to discuss. तो उस पर भी हम बात करेंगे. एंड व्हाट काइंड ऑफ द चैलेंजेस इंडिया इज फेसिंग रिगार्डिंग द 5G टेक्नोलॉजीज. ओके, देयर इज सो मेनी चैलेंजेस. उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं ना, उसके बारे में बात करेंगे. सपोज दैट द हुआवाई केस. ओके, हुआवाई केसेस रिगार्डिंग द 5G टेक्नोलॉजी, उसमें हम कुछ बात करेंगे. द सम फाइनेंशियल चैलेंजेस. ओके, ठीक है, ओवर द 5G टेक्नोलॉजी इन फ्रंट ऑफ द इंडिया. तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, हाँ, हमें क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन भी करना है. वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्रिप्टो करेंसी ऑल्सो. ठीक है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो करेंसी, आफ्टर दैट द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ठीक है, so for today this is enough, and we will meet in our next class. ठीक है, and the topics would be carry further in our next class. ठीक है, तो तब तक